बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न की रमज़ान ट्रांसमिशन मेहमान रमज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान अंजुम मलिक और आज सैटरडे का दिन है और 13 रमज़ान है और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने जुमे वाले दिन अपनी रमज़ान ट्रांसमिशन की, आपका बहुत शुक्रिया। और जो लोगों ने हमारे साथ ज्वाइन किया हमें प्रोग्राम में और हमारे जो स्पॉन्सर्स थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न को भरपूर सपोर्ट करने का बहुत शुक्रिया। क्रिस्पी फूड मुस्लिम वेलफेयर कैनेडा, फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट वी आर वेरी मच थैंकफुल आपकी सपोर्ट का। आज का जो प्रोग्राम है, ख़ास तौर पे आज हम 23 मार्च वाले दिन आपसे बात कर रहे हैं 2024 में। और जैसे कि आपको इल्म है कि 23 मार्च पाकिस्तान में छुट्टी का दिन था। आज 23 मार्च बड़ा इम्पॉर्टेंट पाकिस्तान रिपब्लिक डे के हवाले से जो था, ये हमारा दिन होता है, हर साल मनाया जाता है। इस तारीख को करारदार पाकिस्तान जो थी वो मंजूर हुई थी मिंटो पार्क लाहौर के अंदर। और इस पर आगे चल के बहुत सारी आपसे बातें करेंगे। लेकिन अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप हमें वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न की सारे IP चैनल्स के ऊपर आप हमें ट्यून हो जाएं। इस वक्त हम सारे बॉक्सेस के ऊपर हैं। हम लोग इस वक्त फेसबुक पे हैं और यूट्यूब पे भी लाइव हैं। अगर ड्यूरिंग द प्रोग्राम आप हमसे बात करना चाहते हो, ख़ास तौर पे आज आपके बच्चे आपके साथ हैं, 23 मार्च का दिन है, 23 मार्च की जो अहमियत है उस हवाले से अगर आप हमारे साथ इंटरैक्ट करना चाहें तो हमारे स्टूडियोज़ के लाइन के नंबर जो हैं वो है 9056704114। वो आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमेशा हमारी स्क्रीन पे रहते हैं हमारे नंबर्स, ताकि आपको डायल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और कभी भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। हमारे स्टूडियोज़ की लाइन हर वक्त खुली रहती हैं। आगे चल के जो हमारा सेगमेंट होता है जिसमें कि हम क्वेश्चन आंसर आपसे पूछते हैं, तो आज का जो क्वेश्चन आंसर का जो हमारा सेशन है, जो सेगमेंट है, वो मैंने बड़ा आसान रखा है। तो आज हम बात करेंगे जो 23 मार्च के हवाले से, उस हवाले से बहुत सारे सवाल करेंगे। अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहें और आप इनामात जीतने चाहें, क्रिस्पी फूड के जैसे कि उनके गिफ्ट हैम्पर्स हैं, और उसके साथ साथ हमारे पास कढ़ाई बॉयज़ जो हैं उसके गिफ्ट वाउचर्स हैं आपके लिए 20% डिस्काउंट के, जो कि आप अपनी फैमिली के साथ जाके वहाँ एंजॉय कर सकते हैं। मील उनका एक ज़बरदस्त किस्म का रेस्टोरेंट है, फूड उनका अमेजिंग है, एम्बियंस उनका बहुत ज़बरदस्त है। 2 लोकेशन से आपको सर्व कर रहे हैं, ख़ास तौर पर टोरंटो में भी और ब्रैम्पटन की जो लोकेशन है। तो कोशिश भी करेंगे आगे चल के ज़ुहैब जो उनके ऑनर हैं उनसे बात करें। और लेकिन बड़ा इम्पॉर्टेंटली ये है कि ड्यूरिंग द प्रोग्राम आपका साथ बड़ा ज़रूरी है हमारे साथ इस प्रोग्राम के अंदर। और वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न की हमारी कोशिश ये रहती है कि इस रमज़ान ट्रांसमिशन में एक तो आपके साथ बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो भी शेयर की जाएँ रमज़ान के हवाले से, करंट अफेयर के हवाले से, और उसके साथ साथ जो हमारा कॉल करें इनाम जीतों का जो सेगमेंट है, कॉल करें इनाम जीतें का जो सेगमेंट है, वो बड़ा लोगों को पसंद आता है और बहुत सालों से हम इसको करते आ रहे हैं। और उसमें हमारे पास जो क्रिस्पी के गिफ्ट हैम्पर्स हैं वो हमारे पास हैं। उनकी पूरी जो प्रोडक्ट हैं, जो उनकी लाइन है, जो आपको रिटेल आउटलेट्स पे मिलती है, वो आप हम उस बॉक्स के अंदर आप देख सकते हैं, उस बैग में होगी, जिसको कि आप एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ उन्होंने इस दफ़ा स्वीट्स जो हैं वो भी हमें दी हैं क्रिस्पी फूड वालों ने, जो कि हम ऑब्वियसली जब हम आपकी कॉल्स आती हैं तो वी वुड लाइक टू गिव दैट टू यू एज़ वेल। हम आपके बच्चे हैं घर में, अगर दे लाइक स्वीट्स तो उनके स्वीट बॉक्सेस हैं, सो दे विल एंजॉय दैट। रमज़ान जैसे चल रहा है, ईद आने वाली है इंशाल्लाह, तो ईद पे आप उनको वो गिफ्ट्स जो दे सकते हैं, जो स्वीट के गिफ्ट्स हैं जो कि उन्होंने हमें दिए हैं। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है आज। तो ख़ास तौर पे आज का जो प्रोग्राम है 23 मार्च के हवाले से, उसमें जैसे कि मैंने अपने प्रोग्राम के ओपनिंग में कहा कि अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहें तो आप हमें कॉल करके हमारे साथ बात कर सकते हैं। 9056704111 हमारे स्टूडियोज़ के लाइन के नंबर हैं। हमारे पास स्टूडियो में भी एक तो गेस्ट होंगे और वो थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे आगे चल के। लेकिन जो क्वेश्चन आंसर का हमारा जो सेगमेंट है, जो वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न पे ख़ास तौर पे जो हमने आपके लिए तरतीब दिया हुआ है, वो बड़ा अहमियत का हामिल है। चूँकि हम चाहते ही हैं कि आपके जो बच्चे जब आप घर पे आप अपना अफ्तारी करते हैं तो बेसिकली जब हम आपके साथ वो इस्लामिक क्वेश्चंस करें तो एक इंटरेक्शन जो डेवलप होता है उससे बच्चे बहुत कुछ सीखते भी हैं। और ख़ास तौर पे 23 मार्च के हवाले से
तो मैं चाहूँगा कि आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं हमारे सारे आईपी चैनल्स के ऊपर, फेसबुक पे लाइव हैं, यूट्यूब पे लाइव हैं। अगर आप कोई भी सेंटिमेंट शेयर करना चाहते हो आज ख़ास तौर पे 23 मार्च के हवाले से, तो प्लीज़ वो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हम 2-3 मिनट के लिए एक ब्रेक पे जा रहे हैं। हमारे पास कुछ आपके लिए मैसेजेस हैं, वो आप तक लाना ज़रूरी है। और कुछ 23 मार्च के हवाले से कुछ हमने चीज़ें तरतीब दी हैं आपके लिए, आप उसको देखें और उसके बाद फिर हम बाकायदा प्रोग्राम में वापस आते हैं, फिर आपसे बात करेंगे डिटेल से और बहुत सारी आपसे आज डिस्कशंस करेंगे और अपनी लाइंस खोलेंगे। और ड्यूरिंग हमारी ट्रांसमिशन के अगर आप हमसे बात करना चाहें तो जब हम ब्रेक पे भी हों तो वी कैन स्टिल टेक योर कॉल्स। 905-670-4114 is the number to call. You are watching Voice of Toronto Television with me, Anju Malik. We'll come back to you in about 4 to 5 minutes time. बहुत शुक्रिया, thank you. Muslim Welfare Canada has made a concerted effort to lead the fight against child labor, poverty, and illiteracy in third world countries through the generous support of our donors. Both girls and boys receive free, good quality education. Help educate a needy child for just $1 a day or $30 per month. Donate generously. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. एक नई करारदाद का इंदराज, एक नई सोच का आगाज, बेदार हुआ आजादी का शऊर, जब जागी आजादी पाने की लगन। याद करें फिर वही दिन 23 मार्च। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविजन की लाइव ब्रॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट अंजू मलिक। आप देख रहे हैं रमज़ान ट्रांसमिशन मेहमान रमज़ान। और आज ख़ास तौर पे हम बात कर रहे हैं 23 मार्च के हवाले से। अभी आपने कुछ क्लिप्स देखे पाकिस्तान में 23 मार्च के हवाले से, और मैं सुबह देख भी रहा था कि पाकिस्तान में कुछ परेड्स वगैरह भी हुई और काफ़ी एक जोश और वलवला था लोगों के अंदर। तो ऑब्वियसली ये दिन ही ऐसा है, 23 मार्च का जो दिन है हमारे लिए पाकिस्तान रिपब्लिक डे जिस तरह मनाया जाता है। 14 अगस्त भी मनाई जाती है, लेकिन 14 अगस्त जो इंडिपेंडेंस डे है और 23 मार्च जो है वो रिपब्लिक डे कहलाता है। इस पे आगे चल के डिटेल से बात करेंगे, लेकिन ड्यूरिंग दिस ट्रांसमिशन इफ़ यू वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ द शो, प्लीज़ पिक अप द फोन, गिव अस अ कॉल एट 905-670-4114. Actually मेरे पास स्टूडियो में I have we've been running these different candidates who are coming to our platform time to time, and it's always been our pleasure to have them on our studios and promote them to the best of our ability to our community and create that awareness that where they come from, who they are, what their vision is, what are they bringing to the table, which party they belong to. So a very dear friend who I've known for years now, he is and I was kind of got over by surprise when he told me that he is running for member of parliament in the next election. And so I have with me, I think we have a caller. Let's take a call first. Assalamu alaikum. Hello, welcome to Ramadan transmission. Hello. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सोबिया बोल रही हूँ मिसागर से। आपका प्रोग्राम हम देख रहे हैं, बहुत अच्छा है और बहुत मालूमात में होती है, और हर साल हम इंतजार करते हैं कि कब आप लोग रमजान डांस आप करें ना जी जी। तो जी बहुत अच्छा प्रोग्राम है और हम बहुत शौक से देखते हैं आपका शो। तो आप क्वेश्चन आप कब करेंगे? अच्छा, क्वेश्चन आपसे मैं ये कर लेता हूँ कि 23 मार्च जो है ये जो पाकिस्तान रिपब्लिक डे है, इसके बारे में कुछ बता दें। ये कहाँ पर करारदाद पास हुई थी, ताकि इनाम आपके लिए होगा फिर क्रिस्पी का या कढ़ाई बॉयज का? जी ये लाहौर में हुई थी करारदाद, पाकिस्तान करारदाद, बिल्कुल ठीक है जी, लाहौर में हुई थी जी जी। और कौन से साल में हुई थी ये? 1947। नहीं, 1947 तो हमारा इंडिपेंडेंस ईयर है ना। करारदाद कब पास हुई थी? 23 मार्च। 23 मार्च का दिन था। साल कौन सा था?
23 मार्च और साल कौन सा था? जी जी साल का 23 मार्च 47-48 में हुआ था। नहीं नहीं, 23 मार्च 1940 को ये करारदाद पास हुई थी और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ था। जी लेकिन आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। तो आप क्रिस्पी का गिफ्ट लेना चाहेंगे या आप कराई बॉय जाने चाहेंगे? जी, क्रिस्पी की बड़ी क्रिस्प चीजें होती है, हमें बहुत पसंद है। जी जी, तो वही दे दीजिएगा। और कैसे आना है? हम आपका नाम ले लेते हैं और आपको यहाँ आप हमारे स्टूडियो से पिक कर लें, 1200 डेरी रोड, यूनिट नंबर 3, मिसिसागा। जी अच्छा जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर द कॉल, थैंक यू। सो हमारे साथ एक कॉलर थी, तो इसी तरह आप अपना आज 23 मार्च के हवाले से आप कॉल करते रहिए। आपके बहुत सारे हमारे पास इनामात हैं आपको देने के लिए, वी कैन गिव यू ऑल दोज। बट बिफोर वी गो इनटू द क्वेश्चन आंसर segment and talk to you about Ramadan and 23 March, I was just mentioning to you earlier before the call came, a very dear friend who is been nominated now. He's going to be running for the nomination from Mississauga, Aaron Mills. And I have with me in the studios tonight, and his name is Andrew Fahmy. And okay, we have another call. Sorry about that. That was quick. Assalamu alaikum. Welcome to Mahman Ramadan transmission. Hello. जी, कौन सा और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं बात कर रहा हूँ। जी जुहेब, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। सो लेट मी जस्ट गो बैक टू माय कैमरा एंड व्यूअर्स, हमारे साथ हैं जुहेब साहब जो कि ऑनर हैं कढ़ाई बॉयज़ के। और जैसे कि आपको पता है कि जब से हमने रमज़ान ट्रांसमिशन शुरू की है, एवरी डे वी बीन टॉकिंग अबाउट कढ़ाई बॉयज़ और द अमेजिंग फूड एंड द एम्बियंस दे हैव। और ख़ास तौर पे इनका जो 20% का जो वाउचर है जो हम आपको दे रहे हैं, जब आपसे क्वेश्चन आंसर पूछते हैं आपके सही जवाब के ऊपर, वी आर गिविंग दैट। तो हम उनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आई वांटेड टू हैव हिम ऑन अ वीडियो कॉल टुडे, बट वो इतने बिजी हैं अफ्तार के हवाले से, तो ही इज़ विद अस टुनाइट। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का जुहेब भाई। कोई मसला नहीं, आप सुनाइए क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा जरा बताइएगा कढ़ाई बॉयज़ की सक्सेस के पीछे जो आपका जो राज है वो क्या है, जो आपका फूड है इतना अमेजिंग है, आपकी कढ़ाई जो है दैट पीपल आर कीप कमिंग बैक एंड बैक। सो क्या इसकी स्पेशल रेसिपीज क्या है? जी एक्चुअली रेसिपीज ऑफ कोर्स हम नहीं बता सकते हैं, रेसिपी सारी सीक्रेट है कढ़ाई बॉयज की। एक्चुअली वी यूज ऑल द फ्रेश इंग्रेडिएंट्स और हम स्क्रैच से कढ़ाई को बनाते हैं। तो बेसिकली जो स्क्रैच से सारे फ्लेवर्स होते हैं वो कढ़ाई के अंदर रह जाते हैं, तो उसी कढ़ाई के अंदर हम फिर सर्व करते हैं। तो जो कढ़ाई बॉयज है इनकी ट्रेडिशनली लोहरी स्टाइल स्पाइसेस है सारे, ये पाकिस्तान की याद दिला देते हैं कि सारे फ्लेवर्स जैसे पोटोहारी कढ़ाई, केबोस कढ़ाई, ये सारे इनके इन हाउस स्पाइसेस हैं जो पाकिस्तान से हैं। ओके ओके ओके। और अगेन इनको जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है, कौन सा मसाला किस टाइम पे डालते हैं, ये सारी इनकी रेसिपीज हैं जो चलती आ रही हैं, जो हम फॉलो करते आ रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपका बजाते खुद इसमें तजुर्बा क्या रहा है रनिंग अ रेस्टोरेंट, खास तौर पे ये कढ़ाई के हवाले से। डू यू हैव अ बैकग्राउंड इन दिस इंडस्ट्री बिफोर, या जब आपने इस बिजनेस को शुरू किया और आपने फ्रेंचाइज ली उसके बाद आपने सब कुछ सीखा है? तो नहीं, एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ। मुझे वैसे कुकिंग का तो बहुत पहले का ही शौक था। मैं घर में तो बारबेक्यू वगैरह करता ही रहता था, जैसे कि आजकल मोस्ट लाइकली एवरीबडी आप भी करते होंगे बारबेक्यूज। तो शौक तो मुझे कुकिंग का बहुत था। तो मैं लाइन ऑफ जो मेरी थी काम की वो थी कार रेंटल। तो मेरी पहले 2008 और 9 में कार रेंटल थी एंड अल्हम्दुलिल्लाह वाज गुड। लेकिन कोविड आ गया एंड आपको पता है बहुत सारे बिजनेसेस उस टाइम पे क्लोज डाउन हो गए। तो मैंने भी फिर यही सोचा, मैंने कहा क्या किया जाए। तो फिर मेरा खाने की तरफ था कि मैं दूसरा से चीज मुझे अच्छी आती है, वो है खाना पकाना, खाना बनाना, क्यों ना इसको ट्राई किया जाए। अच्छा। अब मैंने जब सोचा कि फिर कोई फ्रेंचाइज ली जाए या अपना खोला जाए, तो उस टाइम पे हम लोग कढ़ाई बॉयज बहुत जाते थे। हम लोग फैमिली काफी पार्टीज होती थी, हम इवेंट्स होते थे हमारे। तो खाना हमें बहुत अच्छा लगता था, स्पाइसेस बहुत अच्छे थे, फ्लेवर अच्छे थे, सर्विस अच्छी थी। इसी तरह उनसे मेरी बातचीत इस मामले में शुरू हुई और फिर उनसे मैंने डाउनटाउन की लोकेशन 2021 में ले ली। माशाल्लाह। तो आप देख रहे हैं, अगर आप देखना चाहें, हम लोग डाउनटाउन के अंदर हमने नाम कायम किया है कढ़ाई बॉयज का। हम टॉप रेटेड लोकेशन है, हमारे 4.8 स्टार्स रेटेड बाय ऑलमोस्ट 10,000 लोगों ने रेटिंग की हुई है। खाने की क्वालिटी अच्छी है, सर्विस अच्छी है, वी हैव रिटर्निंग कस्टमर्स, हमें सेम कस्टमर्स हमारे वहाँ पर आते हैं, हमारे केटरिंग के ऑर्डर्स हैं, हमारे मतलब ये कहने के एवरीबॉडी लव्स द फूड। वी आर द टॉप रेटेड रेस्टोरेंट
अब इंशाल्लाह जरूर ये ब्रैम्पटन में हम आ गए हैं और ब्रैम्पटन में अभी तक भी हम सही जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आगे भी हम सेम क्वालिटी रखेंगे, सेम फ्रेश इंग्रेडिएंट्स होंगी और सही रहेगा। अच्छा, मैं आपसे, चूंकि देखेंगे रमज़ान ट्रांसमिशन है और रमज़ान में हमारे बहुत सारे स्पॉन्सर्स हैं, क्रिस्पी हैं, शॉन हैं और लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग देते रहते हैं अपने व्यूअर्स को। आपका जो वाउचर है वो भी हम प्रमोट कर रहे हैं। एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू से फॉर द मंथ ऑफ रमदान के कोई ख़ास चीज़, अगर किसी ने कोई पार्टी करनी हो वहाँ पर कितनी की आपका एम्बियंस तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है, आपकी जगह कितनी बड़ी है, उसके अंदर कुछ डिस्काउंट वगैरह क्या मिल सकता है, मतलब लोग जो आपको सुन रहे हैं सो दे कैन बेनिफिट, बिकॉज ये अफ्तार का सीजन है, लोगों के घरों के अंदर अफ्तार्स होती हैं, आप लोग केटरिंग भी करते हैं, आप लोग केटरिंग भी करते हैं? हाँ जी, हम केटरिंग भी करते हैं और मैं आपको ये भी बता दूं कि रमजान में हम लोग समोसे, रोज, रूह अफ़ज़ा, खजूर तो वैसे भी सर्व कर रहे हैं, तो रोजा तो हम खुलवा रहे हैं, चाहे आप कुछ लेना चाहे ना लेना चाहे वो तो हम आपको फिर भी देंगे। तो हम तो चाहते हैं कि जो भी हमारे यहाँ आए वो खा के जाए, राइट। दूसरी बात ये मैंने आपको बतानी थी कि रमजान में यूजली मुझे जो काफी लोग अप्रोच करते हैं वो बोलते हैं कि आप बफे क्यों नहीं कर रहे। देखिए मैं बिलीव करता हूँ कि बफेज में खाने की क्वालिटी बहुत लूज होती है और इफ्तार के टाइम इंसान इतना ज्यादा नहीं खा सकता, तो हम लोग आपको पैकेज ही ऐसा बना के देंगे जो बेसिकली बफे ऑन द टेबल होगा आपके लिए एंड यू गेट टू टेक फूड होम। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि हमारे पास एक पिछले दिनों में भी एक किसी तरह रिजर्वेशन थी, तो 20 पीपल, और उन्होंने कहा यार हम अफ्तार देख रहे थे, तो मैंने उनको बोला जस्ट ट्राई अस आउट, दे केम बाय, उनको हमने मेन्यू बना दिया। एवरेज टिकट प्राइस वाज अबाउट $30 to $35 जो आजकल विच इज एवरेज फॉर बफे, और उनको खाने का भी इतना मजा आया कि फ्रेश नान, फ्रेश कढ़ाइयाँ बन के उनके टेबल पे उनको सर्व हुई एंड दे लव्ड इट सो मच। सो आई एम टेलिंग यू कि बेसिकली हम भी चाहे तो हमारी भी 100 की सीटिंग है, हम भी बफेट कर सकते हैं, पर अगेन आप खुद सोचें कि जब 3 घंटे लगातार एक ही कंटेनर में वो जब खाना लेकर आते हैं, सर्व करते हैं, क्वालिटी फ्रेशनेस नहीं रहती है, क्योंकि हमारा जो मेन है काम, हमारा कढ़ाइयों का काम है और सारे फ्लेवर कढ़ाई के अंदर ही रहते हैं। जो कढ़ाई के साथ जो आप नान लगा के खाते हैं, जो उसका मजा आता है ना, वो आपको बफे में कभी नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। चलें, बहुत शुक्रिया ज़ुहैब हमारे साथ कनेक्ट होने का। आपसे मुझे पता है कि आपका बड़ा बिजी टाइम होता है, बट आई वुड लव टू हैव यू ऑन अ वीडियो कॉल ताकि लोग आपको बनफ़ से नफीस देख भी लें कि आप कैसे खूबसूरत इंसान लगते भी हैं। माशाल्लाह, यू आर वेरी नाइस मैन। और आपका बहुत शुक्रिया, और शकील साहब का भी बहुत शुक्रिया, और वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविजन को स्पॉन्सर करने का भी बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ अटैच होने का भी बहुत शुक्रिया। नहीं, कोई मतलब नहीं। और बाकी आपको जैसा मैंने बता दिया है कि जो 20% वाउचर है आप वो ऑफर कर सकते हैं, एंड आप बस उनको मेरा नाम और नंबर दे दीजिएगा, जो भी आपके कॉन्टेक्ट्स होंगे, और दे कैन कॉन्टैक्ट मी, मेक रिजर्वेशन एंड आई विल गिव देम ऑनर दैट कूपन फॉर देम। बहुत शुक्रिया ज़ुहैब, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, ये थे हमारे साथ ज़ुहैब जो कि ऑनर हैं कढ़ाई बॉयज़ के। 2 लोकेशन से आपको सर्व कर रहे हैं, टोरंटो डाउनटाउन और ब्रैम्पटन सिटी सेंटर में। 20% का डिस्काउंट है वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न के व्यूअर्स के लिए, और आप जाएं वहाँ जाके एंजॉय करें। कॉम्प्लीमेंट्री अफ्तार वो प्रोवाइड कर रहे हैं, और जब आप अपना फूड ऑर्डर करेंगे उसके ऊपर 20% का आपका जो बिल आएगा उस पर 20% का डिस्काउंट है। सो यू कांट गो रॉन्ग विद इट। इट्स एन अमेजिंग फूड, अमेजिंग एम्बियंस। प्लीज गो आउट एंड ट्राई टुडे। Acha, so I was just earlier before the call came, I was just trying to speak with my friend Andrew Fahmy, who is getting nomination to run in Mississauga, Aaron Mills area. So he's with us tonight at our studios, and I am so thankful that you've taken this time, drove here to the studios, and being a part with us. Good evening. How are you, Andrew? How are you, Anjam? Thank you very much for having us here today, and thank you very much for bringing me, and welcome to all the audience. Marhaba. Marhab Beek. Marhaba. Happy Ramadan to you. Happy Ramadan to you and to all the viewers. So let's talk a little bit of your journey, Andrew. I know that you've been in some sort of politics at the back end, basically, but now you are going to be running for a nomination from. That's a very happening riding actually in Mississauga, Aaron Mills. So let's talk a little bit about your journey, and then I will have some questions for you after that. Absolutely. Thank you very much for that question. And I've been involved in Mississauga Aaron Mills for the past 8 or 9 years now, from nominations to working on the local level with the local MPP, Sheriff Sabawi, who's came to this show multiple times and a great supporter to Mississauga Several Aaron Mills. times. Several times. Absolutely. Over the years. We go for so many years back. Yes.
And I started working with Sharif and a lot of the politicians that are on the ground. The main focus that got me interested is I looked at politics and some of the decision-making processes, and sometimes it makes you wonder. Walk me through the thought process of how you came up with this policy. Who asked for this? There's always someone that moves things in politics, and I've always been intrigued, and that made me interested in volunteering and working with different campaigns and seeing how we can benefit Canadians. Before I go into the politics, I worked in the financial services for 7 years, and I sat across the kitchen table with a lot of families from all backgrounds, from different socioeconomic statuses, and overall, people become in debt so fast in this country that you don't realize how it affects you until it's too late. Right. And I believe now is the too late period. People are struggling, people are having a really hard time paying their bills, from groceries, heating, their gas expenses. Yeah. Everything is becoming a lot more expensive in the last 7-8 years. Yeah. And that compelled me. I've been working with the local MPP for so many years. I know how to pass legislation. I know how to work with ministries. I know how to work with bureaucrats. I know and I understand the system of how tough it is to move one piece of legislation. This is the time that we need to unite, to have people of experience to the job, that people are electing those member of parliaments to represent them. So you need them to have some sort of an experience, some sort of a knowledge of what the job entails. I've been walking the talk for the past 7 years. I understand the accountability of the job. I understand the integrity of that job and what it needs to unite the community, to be there for everyone. Because when you're a member of parliament, you're there for all people. 100%. From all backgrounds, from all socioeconomic socioeconomic statuses, from all different backgrounds and ethnicities. You don't differentiate. Anyone that walks through the door, it is a responsibility for you to help them and to see what you can do to help. So for a lot of people who don't understand the process, let's put a little light on it for like next couple of minutes. When people are thinking of jumping into politics, like a layman, if somebody's watching you today, is a brand new immigrant to this country, or he's been here for some time and he thinks that he have the drive in him to go and serve, how would somebody be approaching the party? Does he have to start at a grassroots level to volunteer, have that experience, then go on further with any particular party he likes of his choice? Let's walk it through that. What is the process in Canada? Because of the diverse community we are, the multiculturalism we are. Let's walk that through to some of the people who are watching you of your age, who think, what, this is for me. But where would I start? How do they start? Get involved. Okay. Get involved. Look at a local campaign. Look at someone that is interested to put their name forward. Okay. Someone that is interested to serve the community with integrity, and do your homework. Our former mayor, Hazel McCallion, may she rest in peace, she always said that word: do your homework. Do your homework. You gotta believe in what you're spending your time with. You love the media,
and you're excelled at creating a show that would, you have a lot of diversity in type of topics that you present, and that's why you have your followers. You spend the time, the energy, the grassroots. Same thing in anything that you want to go after. You gotta study, you gotta go after it, you gotta volunteer, you gotta put in the hours, and to be competent in what you do. Okay. Before I put my name forward, I've been a grassroots volunteer with the party. Is the for education 8 very years. important factor in this? Education and experience. Okay. It's not a major decider of. Okay. It's not a qualification or a requirement. It's not a requirement per the Canadian. But is it standards. who knows who? Is that No. Okay. It's not. It's usually not who knows who. You spend your time to build your network and to Okay. build your grassroots movement, to build your plan, to build what you want to run for. To run as a member of parliament is a great responsibility. You gotta spend the time to learn it yourself. I spent 8 years now to learn how to be a federal or a member of parliament, how to be an elected official. It's not something that you decide and you go after within 3 months, 6 months, 9 months, Right. or a year. It's something that you gotta put a plan for, you study, and to be ready for what's coming. It's not a one issue, and you see a lot of candidates that run that are centered around one issue or one vote or one community, or that's not the Canada that we should be fighting for. Right now, Canada has been divided for so many years. This is the time that we need to choose candidates that are uniting all the communities, that are uniting everyone for the benefit of Canadians and Canada. Okay. That should be the number one priority before anything else. When a plane is crashing, what do they tell you? Put your own mask first. Correct. This is the time where we need to put our own mask first and to look at our home here in Canada, because there's a lot of issues to discuss and to fight in our Canadian nation right now. Andrew, keep the thought. We're going to go for a 2 or 3 minutes of commercial break. Actually, the break is especially with the messages from our mayors, the member of parliaments for the Ramadan greetings, and we're going to listen to those. And when we're going to come back, I have a lot more questions for Andrew Fahmy, who is running nomination for Mississauga Aaron Mills area for a member of parliament in the next upcoming election, whenever they happen. He's getting ready. We got a lot of more questions for him, and we will ask him regarding his journey, especially into what his visions are, what he would like to do when he gets elected after the nomination. If elections happen, he becomes member of parliament, what people can expect out of him as well. Stay put. We're coming back to you in about 2 to 3 minutes time. You're watching Voice of Toronto Television with me, Anju Malik, and do not change this channel. Thank you so much. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ETN ਟਰੈਵਲਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਇੱਕਦਮ ਸਮੂਥ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲ ਆਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਪੈਕੇजेस cruises ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ ETN ਟਰੈਵਲਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਨੀਡ ਲਈ one stop solution 2 locations to serve you Brampton and Mississauga ETN Travels serving you from 2 locations, Brampton 905-463-1301, Mississauga 905-463-1304. Ramadan Mubarak to Muslims here in Canada and around the world. At this, the beginning of the holy month of Ramadan. From the time of suhoor to
Iftar, Muslims persevere through mental and physical challenges of fasting, reminding themselves of those around the world who live in hunger and poverty. Canada's Muslim communities will give back through inspiring acts of charity, helping restore hope to communities and neighborhoods across our country. As Muslim Canadians begin this sacred season of worship, gratitude, and spiritual reflection, let us all give thanks for the incredible blessings we enjoy in this, the greatest country on earth. Common sense conservatives will always stand with Muslims for our shared values of faith, family, and freedom. United against all forms of hatred against Muslims or against any person or group. Let us unite for our shared values and bring home the country we know and love. Ramadan Mubarak to all those who are celebrating. Assalamu alaikum and Ramadan Mubarak. I'm Patrick Brown, Mayor of the City of Brampton. Tonight, with the new moon being sighted, we join our Muslim neighbors and friends to recognize the holy month of Ramadan. Muslims here in Brampton and around the world will be fasting from dawn to sunset for an entire month. It is an important time of year as Muslims abstain from food and drink during the day and increase their acts of worship to strengthen their relationship with God and humanity. Muslims are charitable, but especially more so during this month, giving to the poor and helping those in need. With the loss of life occurring in Palestine on a daily basis, it is certainly on the minds of many. Brampton Council was one of the first to call for a ceasefire, knowing the pain and horror of this conflict. The horrifying trauma of the conflict is felt in our city. Our prayers and thoughts continue to be with those suffering. Brampton is one of the most multicultural cities in Canada. Diversity is our strength, and we attempt to learn about each other's faiths and backgrounds. And really, these important events in faith communities are an opportunity to learn about each other, to educate each other. Personally, I love attending iftars across the city and celebrating Ramadan with the community. And there will be events occurring at masjids across Brampton. We celebrate with the community. And we look forward to hosting our own community iftar with City Council on Tuesday, March 26 at 6:30 p.m. As I do every year, I fast with the community on the day that we host an iftar to show our solidarity with the community. And after Ramadan, we invite you to join our City of Brampton Eid celebration on Saturday, April 27th from 2 to 5 p.m. at Shinkuzi Park. And there's going to be a ton of activities for those of all ages as we celebrate Eid as a city. So Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak, happy Ramadan. Contact Anju Malik in Canada on 905-965-4786. Welcome back, viewers. You are watching Voice of Toronto Television Ramadan transmission with me, Anju Malik, and I have the liberty now today speaking with Andrew Fahmy, and he is running for nomination from Mississauga Erin Mills. We're going to ask him what party he wants to run it for. That's something we didn't ask in the last break when we were talking to him. But more than that, I mean, if you have a question and if you live in that riding of Mississauga Erin Mills and you are watching us tonight on all IP channels, on Facebook Live, wherever you are watching us, if you have a question, please pick up the phone, give us a call at 905-670-4114. Yes, Andrew. So let's talk a little bit about
your vision. What motivated you after being in this scenario, the role that you have been in for some time, that you want to come forward and you want to be a part of of the caucus, I would say, and of the party, and run for that nomination for Member of Parliament? Well, as I was saying earlier, when you go for public service, you're not looking for fame or money, definitely not money. It's something that it's a public service. You're a servant to the public. And you must have that mentality. It's not easy to be a member of parliament or to run for office. But I believe that I've spent the last decade learning and acquiring certain skills to allow me to be efficient and to work with different communities and different sectors of our economy. When people immigrate to Canada, they're coming here for a better life. They came to Canada for the North American dream. Right. But where is that dream now? It's far from a reality. I've looked at multiple parties before getting involved, and I found myself assimilating a lot more morally and consciously with the Conservative Party of Canada. They're a lot more economical. They focus at economy, they focus at prosperity, they focus at creating a better living for the people in Canada. And that's something that we've noticed in previous governments. Usually they get in, they balance the budget, they start creating an environment for businesses to grow, small businesses to flourish, and that in return create jobs into the ground. And that proved to be a better economy and political system and stable one than one that focuses more towards social assistance and a bottom-up approach. So reality is you need both. There is a short-term need and there's a long-term goals that you need to achieve. Over the last 8 years, a lot of issues that happened that they were completely not, I don't think they've been accounted for. Immigration at an all-time high, I believe, to prove a point and not towards a prosperity towards Canada and what Canada needs. A lot of spending has happened to appease political points, not towards what Canada should plan for. That we're now stuck at a very tough time where people cannot afford to pay their bills. Inflation is very high, which causes crime to increase, which causes fights, violence, death, guns, addictions, family values, and divorces at an all-time high. No, so if I go back in time, the last 2, 3, 4 years during pandemic, the Liberal Party of Canada, Prime Minister Justin Trudeau, he came up with several policies that Canada was one of the countries that came forward with the CEBA loans, the HASCAP loans, a lot of funding for businesses, people who were shut down and they were at home. Do you think that was one of the reasons that people voted them again? Because people were looked after in small businesses for the funding that the government gave them versus other than the policies that they possess? It's something that the Liberals have always used as money in a short-term to charm people with that, to get the votes? To get the votes. We've seen it on a provincial levels where
The minimum wage increases surprisingly right before election to try to appease for voters, and in 2021 that has happened again. Not just that, he divided Canadians among Canadians. During the elections, he started telling people that if you're not vaccinated, you're not allowed to go out, and if you're vaccinated, you're gonna start to go out. So selfishly, he divided Canadians, divided people against each other. That made people, yeah, I have my freedom now. I don't care about what happened to the other person. I am out. People did not, in the last election, Trudeau gained only 1 seat. Lost some, won some. That was the most expensive seat in Canada. That But cost don't you the think- but taxpayers don't you think- $450 million or more for 1 seat. A general election across Canada, from coast to coast to coast, and he gained 1 seat. But Andrew, don't you think that the Conservative Party of Canada was also in a reform cycle where they didn't had a commodity to sell? The leader that they had was not sellable as compared to Justin Trudeau. What do you think about that? Definitely in 2021 there was issues on the local grounds, and I thank Aaron O'Toole for putting his name forward to be the leader of the party, and he served the party for so many years. And as a veteran and someone who sacrificed and put a lot of time and service to Canada, I applaud him for trying to put some common sense into Canadians and into government throughout that time. Definitely there was a lot of lessons learned throughout that time, and the Liberals and Justin Trudeau, he knows how to campaign very well and how to PR, and let's not forget, he used to be a drama teacher. He knows how to capture the camera. He knows what ticks on TV, and he understands public relations and communication very well. I mean, I can see the polls right now in the last few months. They are not in their favor. Because you know, Canadians now started to understand and see and read between the lines. It's no longer... And that could be the housing crisis, immigration issues, students coming into Canada, the crimes itself, like a lot of issues. Arrive Can app or Arrive But app. if the elections happen tomorrow, now, what's going to be the outcome? I believe a major conservative election and win as it stands today. But as long as the NDP, Jagmeet Singh party, has a coalition government with the Liberals, what do you foresee? Where can we see elections happening? I don't think any election is going to be happening. A lot of the member of parliaments right now, it's funny because a couple of days ago, the government and the Liberals, they added a new bill that would allow the members of parliament to cash in a nice pension if they would stick all the way until September of 2025. Okay, all right. That they would cash in a very good nice pension. As they deserve. If you put your name forward and you're sacrificing your life, and being a member of parliament and an elected official, you do a lot of sacrifices. It's time away from your family, it's time away from your relatives, it's time away from your children, it's time away from
a lot of things to put your name forward. The least we can do is for people that run the course and put time. I question the timing. So it's very enticing for It's from all them about to the say timing. that you stay, hold on with us Yes. for the next several months, Yeah. a year, more than a year, Yeah. and cash out a better pension. So he gave them a reason to just hold on a little while. Hold on a little while. Okay. Okay, let's talk a little bit about your riding. Let's talk about the riding where you want to run nomination. What are the problems that riding have right now that you think that the incumbent over there is not doing what they're supposed to do to go out there and perform much better? And if you come in, what is your agenda is going to be? The number two things that I hear at every door, and when I talk to people in Mississauga area mills, is number one, affordability. Taxes, 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 taxes. We're scheduled for another 23% increase on April 1st on your gas, on your groceries, on your heating, on every aspect of your life is going to increase by 23%. How are people going to afford it? The Liberal government and Mr. Trudeau allowed Atlantic Canada to have an exemption after their federal and party caucus members asked him that we're losing these ridings, we're losing our support. I think the premier has said that. And the premier has said that as Right. well. Our premier has said that. 7 provinces came out and said, we don't want it. Ontario came out and said, we don't want it. 70% of Canadians, according to a Nanos poll, said they don't want a carbon tax increase on April 1st. Okay. We need to have that voice. When people are saying that we don't want more taxes, we should listen. And I believe that Canada is one of the most taxed nation in all of the G7 world, if not the G7 economies, if not the whole world. Okay, hold that thought. We're going to come back. We're going to go on a very short break. Viewers, आप देख रहे हैं मेहमान रमज़ान ट्रांसमिशन वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न की नशरियात, और आज 23 मार्च है। अब 7 बज गए हैं और हमारा जो सेगमेंट है, एंट्री हमारे साथ ही रहेंगे। हमारा जो सेगमेंट है कॉल करें इनाम जीतें, तो आज हमने उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया है। वो ये कि अगर आप कॉल करते हैं तो हम आपसे सिर्फ 23 मार्च के हवाले से सवाल करेंगे। आज कोई इस्लामिक क्वेश्चन हम आपसे नहीं पूछेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे हम इस्लामिक क्वेश्चन पर बात करेंगे। आज हम सिर्फ 23 मार्च के हवाले से आपसे बात करेंगे। आप हमें कॉल करें, एक क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, उसका आप जवाब देंगे, तो जो गिफ्ट हैम्पर है क्रिस्पी का वो आपके लिए होगा। या अगर आपने कढ़ाई बॉयज़ पर जाना है 20% का डिस्काउंट, तो वो आपके लिए होगा। हमारे स्टूडियोज़ के लाइन के नंबर है 9056704114 और वो हमारी स्क्रीन पे हैं। हम 2-1 मिनट के कमर्शियल ब्रेक पे जा रहे हैं, उसके बाद हम वापस आते हैं, हम अपनी लाइंस खोलेंगे। एंड प्लीज़ डू गिव अस अ कॉल एंड टॉक टू अस। थैंक यू फॉर वाचिंग वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविजन। Welcome to I Will Get You Mortgage Services Limited. This is Nasir Ahmed, your principal broker for Alberta, Ontario, and British Columbia. Welcome to our new office located at the heart of Markham Road and 401, 2100 Ellesmere Road, unit number 320. Whether it's a residential mortgage for your dream home, it's a commercial mortgage for your business, it's equipment financing, or you're looking for a reverse mortgage because you're senior, we have solutions. At I Will Get You Mortgage Services Limited, we believe in diversification.
That is why we have agents who speak your language. Are you looking to start a new career as a mortgage agent? We are here for you. We will provide you in-house underwriting as well as in-house fulfillment officers that will support you and help you step by step for your mortgage needs. Remember, for all your mortgage needs, easy or difficult, we have solutions. Give us a call. iwillgetyourmortgage.com. रहीम है तू करीम है, तेरी जात सबसे अजीम है। तू रहीम है तू करीम है, तेरी जात सबसे अजीम है। तो करम भी कर मेरे हाल पे, है जो मुश्किलें सब टाल दे। तेरे दर पे हूँ अब मैं खड़ा, तो सुन ले तू मेरी दुआ। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अलैहि, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अलैहि। तेरे दर पे सर को झुका लिया, जो कभी मिला न वो पा लिया। मुझे अपना बंदा खास कर, हो जा रूबरू मुझे पास कर। हर एक निशान मेरी जात का पढ़ता रहे बस ये दुआ। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अलैहि, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अलैहि। कौन कहता है तू है नहीं मौजूद, जर्रे जर्रे में तेरा ही है वजूद। सांस ये मेरी तेरी अमानत है, तेरे दम से ही मेरी दुनिया सलामत है। मुझे मौत का अब डर नहीं, कहे लोग क्या ये फिक्र नहीं। तेरी खाक पर ये जबी मेरी घिसती रहे हर दम सदा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अलैहि, 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 अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अलैहि। वेलकम बैक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न की रमज़ान ट्रांसमिशन रहमान रमज़ान, और मैं हूं आपका होस्ट अंजुम मलिक। हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं एंड्रू फैमी, जो कि नॉमिनेशन लड़ने जा रहे हैं मिसिसागा एरनविल से, और हमें अभी ज्वाइन किया है सीमा जम्बल साहबा ने, जो कि हमारी होस्ट हैं इस्लामिक प्रोग्राम का, जो प्रोग्राम करती हैं रोशनी।
और शी इज़ विद अस टुनाइट एंड अस्सलाम वालेकुम टू यू एंड रमज़ान करीम टू यू. सिंस आप मैं आज देख रहा हूँ फिजिकली तौर पे स्टूडियो में, तो रमज़ान मुबारक टू यू. सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग टुडे इज एंड्रू is the 23rd March, which is the Pakistan Republic Day. That's right. The resolution was passed in Lahore, Pakistan, and then in 1947 we got the independence. That's right. So today is a very, very important day in the Pakistan history because the founder of Pakistan, Muhammad Ali Jinnah, that was his vision. We were talking about the vision earlier, with you. But that was his vision that Pakistan should be an independent state, and we became an independent state on 14th of August in 1947, and the India became 15th of August. We got our independence on the 14th of August. So we celebrate first, India celebrate after us. That's right. Okay. So I know that you've been a part of a lot of these events yourself. How did you find these events when you go in? What sort of sentiments do you feel when you go in with Mr. Sabhavi and you've been a part of those functions? It's always very welcoming when you walk into a community and you just start learning and seeing the history of every nation across the world. And I remember when we were at the embassy of Pakistan, and they were talking about the flag and how the flag was formed to include the inclusivity of all of Pakistan from all its backgrounds. They had a vision back then, and it is our responsibility to continue with that vision at every generation, at every level. Every government or every leader that comes in, they must have that vision too, on how to unite people and how we can all work with each other. No matter what your background, no matter what you worship, no matter what your color is, we're in 2024. We should not be still talking about that till today. It boggles my mind that how come we're in, after all the liberation, after all the connectivity, the whole world is connected with each other. The internet brought everyone together. Right. You have a lot of access to history and you learn from a lot of nations and backgrounds, and you still see division. Don't we learn from the past? Is there no lesson that we should take back home that treat everyone fairly? Correct. Sometimes we get jealous and zealous. I'm not going to say jealous, is zealousy. Yeah. And about the things that we're fighting for. But sometimes we forget that we should respect the person that's in front of you and treat them fairly. Sometimes they're not the problem. Get your point across. Listen more than you speak. And definitely that's something that I learned throughout touring and going everywhere. Listen before you speak. Correct. सीमा जी, to you, मग़फ़रत का अशरा है, रहमत का अशरा ख़त्म हो गया, मग़फ़रत में है. थोड़ा सा आपका तो ये सब्जेक्ट है इस्लामिक जो है, थोड़ा सा इस पर थोड़ा बात कर लें 2-3 मिनट तरह हमारे लोग आपको जो सुन रहे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत करम है, उसने हमें एक और रमज़ान पे का मौका दिया. और रमज़ान जो है वो स्पेशल मंथ है, तो उसमें हम लोगों ने ये देखना है, फोकस करना है. ये नहीं कि हमने सिर्फ अफ्तारियों की दावतें करनी है या अफ्तारियों पे जाना है, वो भी एक पार्ट है, पार्ट ऑफ लाइफ. बट हम लोगों को जो असल उसका जो कहते हैं ना सोल है उसकी क्या है रमज़ान की, तो वो यही है कि हमने इबादत क्यों करनी है और इसमें क्या सिग्निफिकेंट है. इबादत एक्स्ट्रा करने का क्यों कहा गया, लोगों को क्यों कहा गया कमर कस लें. और एंड ऑफ शाबान वो कहते हैं कि आप रोज़े नहीं रखें ताकि आपके अंदर पावर और एनर्जी हो. तो बात यह है कि हम लोगों को सबसे पहले फोकस, वी हैव टू फोकस ऑन द पर्पस ऑफ रमदान. हम हंगर से ही सीखते हैं ना कि हम हंगरी रहते हैं, तो हम सीखते हैं कि जो लोगों के पास इनफ फूड नहीं है. आपको पता है अभी इस वक्त टोरंटो में ये हाल है कि वो फूड बैंक वाले अपील कर रहे हैं, स्पेशली मुस्लिम्स के फूड के लिए, क्योंकि वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है. तो वो लोग दे आर रनिंग आउट. तो हम लोगों ने ये देखना है कि हम लोग जो है ज़रूरी नहीं कि हम अपना
जो दस्तरखान है वो फुल कर लें. हम शॉर्ट कर सकते हैं कि हम ये सोच लें कि हम थोड़ा सा यही चीज़ फूड बैंक में दे दें. हम अपने आप को अगर नहीं अफोर्ड कर सकते आजकल जो हालात हैं, तो उसलिए हम लोगों ने तो क्या है फोकस कि अल्लाह ताला हमारी मगफिरत करें. वी हैव टू प्लीज़ अल्लाह एंड वी हैव टू डू द गुड डीड्स टू प्लीज़ अल्लाह. Very right. तो देन वी कैन गेट मगफिरा. So otherwise it is very hard that you are doing like same routine, then there is no significant of Ramadan, that what are you doing extra and what are you doing a different thing. So इसलिए हम लोगों को मगफिरत के उस पर पहले ही देखना है कि मगफिरत हम मांग क्यों रहे हैं. हम चीज़ गलत करी जा रहे हैं और हम अल्लाह ताला से एक्सपेक्ट कर रहे हैं. जैसे एक बच्चा अपने पेरेंट्स के कहना नहीं मान रहा, बट वो चाहता है कि पेरेंट्स उसको ट्रीट करें बेस्ट, उसको जो जो चीज़ें ही रिक्वायर्ड और शी रिक्वायर्ड दे हैव टू बाय फॉर हिम. तो this is the same way. Yeah. अच्छा, मैं I'm gonna go back. Can I actually add something? I followed little, but I understand what you're saying about fasting in Ramadan is very important. Any fasting is very important. Why? Because if you have a will over your own body, then you can always remember that you should not lie. You should always be careful about how you take care of others, and it's just a reminder and helps you. You have power over your own body, over your own action. If you can stop yourself from eating or drinking, it's very tough, it's very hard, and so is also falling in sin or anger issues. Oh my God. Yes. I heard a lot about anger issues, that there are murders. The reason is they cannot control their emotion, they cannot control their anger. Yes. And see, it affects society a lot. Absolutely. It does. It definitely helps. And they parents are raising their children. They are telling them right and wrong, but they are not teaching them how to control, like you are talking about. If you can control your hunger, you can control other things too. This is a practice that we are doing in Ramadan. Absolutely. That you have to control your emotion, your anger, how you can avoid fighting with people. Absolutely. So let's talk a little bit about you also comes from a heritage of Arabic background and everything. How is the Ramadan starts back home for you guys over there? Well, even if you don't celebrate Ramadan, so in general, how's everything is out kind of what would you call, in especially in your at home. I mean, if you are not practicing Muslim, for example, then but you are in the society of being a Muslim and in the same region of people where you live, and you can see that they are fasting and all that, and you are not fasting, for example. What have been your experience all these years? Growing up in Egypt, Ramadan was the best month I wait for. And you have Christianity there, in and Egypt. Okay. It felt like Christmas. The whole streets are decorated. We do iftars at my school every year, and every classroom used to do an iftar, and we go to each class's iftar, and we compete whose was better, who had better games, and who had better gathering, and decorating the classroom. There is an environment created for Ramadan. It's a beautiful environment. It's an environment of unity and just all of us being together and talking with each other, and it's a month of celebration. I celebrate Ramadan because I'm all for celebrating Ramadan, because it's about controlling oneself, being there for oneself, helping other community, and doing an iftars and across the streets and blocking streets and giving back to the community and to food banks and being there for each other. It takes a community to build a community. And if we are not careful about our own neighbors and the people that share our own streets, then what are we here for?
ليل نهار. لا بالليل كمان زي السعودية ما بيناموا. Yes, Egypt is an overnight same country. like Saudi. Yeah, it is. And one of my vivid memories, once المدفع يضرب بالليل وما تاكلش iftar حاجة. time, everyone is not on the street. It's the only time in Egypt that there is no traffic. The only time during the month of Ramadan, the only time. Everyone, Muslim, Christians, from everyone is celebrating somewhere with someone. And I'm going to go back on my camera and I'm going to forget. just pledge to our viewers tonight, खास तौर पे जो आप हमें वॉच कर रहे हैं कि रमज़ान ट्रांसमिशन है, 23 मार्च का दिन है। 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी, पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे। आज हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। पाकिस्तान में ऑलरेडी सेलिब्रेट हो चुका है, वहाँ रात हो गई है। वी आर स्टिल इन कैनेडा, वी आर सेलिब्रेटिंग इट। और अभी शाम में अफ्तार के बाद बहुत सारी सेलिब्रेशन होने जा रही हैं हमारे शहर के अंदर, मुख्तलिफ जगहों पे, कैपिटल बैंक्वेट हॉल में शाहीन और मतानत भी करने जा रहे हैं और जगहों पे भी हो रही हैं। लेकिन मैं चाहूँगा ये कि अगर आपने हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और अगर आपने विटनेस किया हुआ है इस मोमेंट को अपनी ज़िंदगी में, 23 मार्च 1940 को अगर आप हमारा शो देख रहे हैं और आप कनाडा में रहते हैं तो हमारे स्टूडियोज़ के लाइन पे आप कॉल करें। आपके लिए गिफ्ट है हमारे पास एक 9056704114 हमारे स्टूडियोज़ के लाइन का नंबर है। आप हमें कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं, अपने सेंटीमेंट एक्सचेंज कर सकते हैं आज के दिन के हवाले से, 23 मार्च 1940 जो करारदाद पास हुई थी उस हवाले से। और तो यू नो that would be phenomenal. People can call in and share their sentiments with us. But if they had witnessed back then, back on 23rd March 1940, if they were, and they are in Canada, there's no better thing to discuss today's date. So we were just earlier discussing your journey and what you would like to do and all that. So what is that one thing you feel that, among so many other things, that the people of Mississauga, Erin Mills are lacking from the incumbents who is right now in the party and have the member of parliament seat, and if you come in, what would you like to do for them? So the second, so I spoke first about the affordability and the carbon tax, and we need to reduce that and at least pause the April 1st hike. That's very important. People would and it's going to be a good win for them. And you think it will get paused? It will. I don't think it the will way get the way passed. things happened yesterday. From the way that the things are non-confidence going, motion, it didn't pass. It looks like it's gonna go forward. They're so people still gonna go for a pinch. Yeah, and this is gonna happen again on April 1st of 2025. That's gonna increase again until it be quadrupling that tax to an all-time high. I don't think people will be able to afford it, because once you tax the farmer and then the packager and then the driver and the shipper and the grocery store that holds it, and then you cooking that item and working on that item, that tax is a compounded interest on every family and every person that lives in Canada at the moment. So we need just a little break. Now is not the time. There is a responsibility that we have to share, but this is not the time. The second thing that I believe is very important right now is the criminal code. We need a stronger, secure streets. Someone just shared a video with me last night of a family in Mississauga. The father was just filling gas at the gas station. Oh yeah, I also I think that. I watched that minute so scary. and 40 seconds, and I am appalled at the view. His wife, his 2 kids are sitting in the car. The father is filling gas. The criminal goes, pushes him off the way, opens the door and goes inside the car, while his wife and the children are still in the car. The wife quickly jumps outside, goes at the back, opens the door for her child, get out, and tells her second child, get out of the car. The 2 children, a boy and a girl, they walk out and they stand at the back behind the car. The doors are open and the guy goes and fight the criminal from stealing the car and punches over punches over punches, and the
courageous woman, wife, goes at the back, opens the truck, and gets a bat or something, and goes, and they both. I didn't start see that video. hitting. Oh, she wow. really, and the surprising thing, nobody came to help them. Nobody. Even there are cameras. And that's at the There are gas station. cameras. That's That's at the gas But it station. was A car nighttime. pulls over. She goes back and she calls 911, and she asks the police to come over. And within a minute 40, they themselves pushed the guy out. Oh, wow. They got inside Wow. their I car think the and they woman went was away. Muslim. She was wearing I hijab. believe the Yeah, woman was I thought- was Muslim. Oh, yes. wow. We are at a level that We are not secure. eat We don't feel or be eaten. You gotta fight for your own right. We're becoming a civil wars and domestic violence on the streets. On the streets. This is unbelievable. Yeah. Unbelievable. This And is it's in not the Mississauga. Canada. In Mississauga. Wow. And over the last couple of months, how many shootings have we heard of Yeah. Mississauga? Yeah. In Mississauga, and in Brampton, and in Oakville, and in Milton. Yeah. It's spreading. Young across people are our dying streets. at a very early age. Absolutely. They're dying. You know, the court of justice needs to be moved a lot. Yes. Because they know when they are younger than 18 years old, then they can They do could be anything. out in no time. They hide their identity, so they are preparing them, like they are making them ready to do the criminal acts, and you are safe. Yes. So this is what they are teaching them. Unfortunately, we left the views of consequences for your actions. Yeah. That's correct. We no longer have that value in our justice system, in our criminal code. We need big reforms in our justice system. lot. A We big need to reform. strengthen our borders, security, policing, more funding needed. I think we have a lot of policing in the Peel division. A lot of policies are there. But I think the reason hands are the tied. crime is That's up is correct. because Their of hands the are tied. They because- can't do much. because the culprits let go. I speak with the heroes of our Peel Police Services. Honestly, like, my heart goes out for them. For any person that works on the police service, you walk out of your door every day and Yeah. you don't know if you're gonna come back. Yeah. I have my absolute respect for them. They sacrifice a lot Yeah. and they do a lot for the community. Oh yeah. But the law does not help them, does not justify them to go after the perpetrator. We are at a level now that the police services cannot, and they don't have even if they apprehend that person and take them, they will be out in bail within 48 Well, the hours to 72 Premier hours. Ford, when one of his press briefings said we need like-minded judges Yeah. in the courts. I think it's about time we need to have those reforms done. We need to have swift action taken against these culprits. They should stay behind bars. They should not come out. It's over billions of dollars of industry of car theft. It's a huge crime. You need common uh, sense and balance. yeah. I'm not saying that we should go very far. And I was shocked actually when I heard that at the ports, they had the honor system. You fill out the form, what's in there, okay, no problem, no Yeah. scanners, no checking. No Yeah. strict This judgment. is We what we have- need. We need to protect our borders. We have a lot of honorary system in our law. Yeah, but and for our the system. common people, they are checking their cars when they are crossing Yes. the border. Oh, you have this, Yeah. tax on it. Yeah. Yes. They are focusing more on this thing instead of Yeah. checking Yeah. what is coming. I recently went to the States, and walking into the States and driving into the States, they ask you a couple of questions, and Yeah. then they let you in. And then on the way back to Canada, this is what surprised me. I crossed, and the first thing that once you cross the border, pay $11 Oh yeah. to go back to my own country. Why there a visa on me, a Canadian, and a toll for me Toll. to get into my own back to your own country. Yeah. back into my own country? I didn't pay
getting into the United States. Yeah. So going into It's a free. different country It's is a free ride. Yeah. But going back in To your home. Yeah. you pay it at a full price. It reminds me of our gas. We take it out of our own land, subsidized. We send it to the States at a subsidized rate, and then we buy it at a full price from them. व्यूअर्स आप देख रहे हैं मेहमान रमज़ान ट्रांसमिशन और हमारी बातचीत चल रही है इन जनरल अबाउट सो मेनी थिंग्स राइट नाउ। अफ्तार की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 7:35 पे आज अफ्तार है मिसिसागा में जहां हम हैं, और आप अपने इलाकों के हिसाब से आप अपना अफ्तार कर सकते हैं। हमारी स्क्रीन पे आ रही हैं सारी इन्फॉर्मेशन। हमारे नंबर जो हैं 9056704114 हैं, और अगर आप हमारी ट्रांसमिशन देख रहे हैं, आपकी पहले कॉल्स आ रही थी, बीच में हमारी बातचीत चल रही थी, अब हमारी लाइंस खुली हुई हैं, आप चाहें तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9056704114। 23 मार्च के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं, और उस हवाले से कोई भी सेंटिमेंट आप एक्सचेंज करना चाहें तो प्लीज़ गिव अस अ कॉल। जो भी कॉल आ जाएगी उसको हम फ्री गिफ्ट दे देंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। आप सिर्फ अपनी सेंटिमेंट्स को एक्सचेंज करें। हम 1 मिनट पे एक ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर हम वापस आते हैं। ये मैसेज भी बड़े ज़रूरी होते हैं। मुस्लिम वेलफेयर कनाडा एक मैसेज है आपके लिए, वो आप एक मैसेज सुनिए, उसके बाद फिर वापस आते हैं। यू आर वॉचिंग वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well or a hand pump, call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. Cause I look good. Shake my hair and then I move my shoulders, legs, hands and feet. I know you mad, thanks for the input. It ain't my fault that I look this good. And I don't care because I got my hat on lean like a king. I got a smooth disposition. Got the swag running all through my veins. In the coupe when I'm whipping. I try to top like I make a bar crane. When you talk, I don't listen. Cause I don't really wanna hear you complain. I make a smooth transition and bounce back like a basketball game. Who that got 'em up now? Who that got 'em funky like me? Got their hands up like a touchdown. Where they sweating, they gon' need an IV. Who that got 'em up now? Ramadan Kareem to all of my brothers and sisters. I wish you many blessings this year. I hope that your prayers come true and that you have a wonderful time with your family, friends, and with the community. Once again, happy Ramadan. Logistics Express special Ramzan offer. Send cargo from Canada to Pakistan 5 kgs in just $50. Call now 647-719-3493 or 647-987-6746. Logistics Express special Ramzan offer. वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविजन की रमज़ान ट्रांसमिशन। मेहमान रमज़ान और हमारे साथ हैं एंड्रू फहमी और सीमा तजम्मुल जी हमारे साथ हैं। हमारी बातचीत चल रही थी इन डिटेल से लॉट ऑफ थिंग्स के हवाले से। आज 23 मार्च के हवाले से सीमा जी, 23 मार्च के हवाले से आपकी क्या मेमोरीज हैं? मैं पाकिस्तान में पैदा नहीं हुई और ना वहाँ रही, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने पाकिस्तान से मोहब्बत कूट कूट के भर दी। और आप यकीन करें, वेयर एवर आई गो
आई एम स्टिल अ पाकिस्तान। ऑफ कोर्स। तो पाकिस्तान से मोहब्बत ये नहीं है कि आप वहाँ रह रहे हैं तो आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, आप बाहर रह के भी अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और जैसे पाकिस्तान में जो भी चीज़ें हो रही हैं, गलत हो रही है, तो उस पर भी हम लोगों को आवाज़ उठाना बनता है। बिल्कुल। और मैं ऐसे जो भी कोई इस तरह की यहाँ पे इवेंट होता है, मैं ज़रूर जाती हूँ सपोर्ट करने के लिए कि हम लोगों को अपना कंट्री बचाना है। आराम से नहीं मिला, बहुत सारी सेक्रीफाइसेस हुई हैं और हमारे फोर फादर्स ने की हैं, और वो हमें सुनाते थे ये किस्से कि वो लोगों ने क्या क्या तकलीफ उठाई, क्या क्या लूज़ किया, तब जाके पाकिस्तान मिला। और पाकिस्तान, मेरी जो मेमोरीज हैं बचपन की, चाइल्डहुड की, जब पाकिस्तान गया है, पाकिस्तान बहुत अच्छा लगता था। हम PIA में जाते थे जब, उसकी एक और अलग फीलिंग थी। तो करप्शन जब शुरू होती है ना, तो उसमें हमारा भी हाथ होता है, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। हम लोग आवाज नहीं उठाते, हम लोग कहते ठीक है, एक हमारी आवाज से क्या होगा, लेकिन नहीं, एक की आवाज, एक ही आवाज चाहिए। पाकिस्तान कैसे बना, एक ही की आवाज उठी थी, तो सब उसके साथ साथ शामिल होते गए। और एक पाकिस्तान जो एक ड्रीम लगता था, 1940 में उसका कॉन्सेप्ट था, लेकिन 7 इयर्स लगे, ओवर द नाइट नहीं मिला पाकिस्तान हमें, 7 इयर्स लगे तब जाके हमें पाकिस्तान मिला। तो इसी तरह हम अपना उसी पाकिस्तान को वापस लेना चाहते हैं। हम लोगों को चाहिए हम ढूंढें कि वो कौन लोग हैं जो गलत हैं, जो हमारा मुल्क बर्बाद करने में अपना पार्टिसिपेशन करें। हमने उनको रोकना है। हमने कैसे रोकना है? हमने उस चीज़ को कबूल नहीं करना। देखिए, हम लोग अगर उसी का पार्ट बनी जा रहे हैं तो फिर पाकिस्तान वैसा तो नहीं रह सकता। पाकिस्तान नहीं रहेगा तो हमारी भी कोई आइडेंटिटी नहीं होगी। आप देख रहे हैं ना फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, वो क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं, वो क्यों इतने लोग शहीद हो रहे हैं अपनी फैमिली के लोगों के लिए। वो यानी वो कुछ भी नहीं कह रहे बेचारे, कह रहे हैं कि वो भी चाहे तो मुल्क छोड़ के कहें हम चले जाएं, हम नहीं लड़ते हम इसके लिए। तो वो अपने मुल्क को बचाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी नहीं खोना चाहते। और ये उनका राइट, एंड इट इज एवरीबडीज राइट कि उनकी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो इसी तरह हमें भी एज अ पाकिस्तानी, अगर हम अपने मुल्क को बचाना चाहते हैं तो हमें भी चाहिए कि हम उस चीज़ को रोकें, और किसी भी अंदाज में रोक सकते हैं, हाथ से, मुंह से, लिख कर, या जो भी आप कर सकते हैं, अपना पार्ट अदा करें। प्लीज़ पाकिस्तान को बचाएं, और वही पुराना पाकिस्तान हमें चाहिए। Andrew, first of all, thank you very much for coming into the studios and sharing your views and your vision. There's a lot more sittings we're going to have to do together to understand a lot more the difficulties that are there and how you can address them, how we can address them as well as Canadians. Especially having a voice up at the House of Commons is very important. So what is the message you want to give out, especially in this month of Ramadan, to our viewers? And that's your camera right there. Well, Ramadan Mubarak to all the viewers, and may it be a month of blessings, forgiveness and unity to you and to all your family. This is the time that we all should be united. This is the time where we all should be taking care of each other. Reach out to someone of your family, relatives, an old friend that you haven't spoken to. This is the time that we check up on each other and unite and be there for each other. It takes a community to build a community. Focus at the people that unite. Focus at people that are going to be there for you. You know that life is tough and there's no time for wrong informations or believing things that don't exist. Take time to reach out to someone, help out as much as we can. It takes a community to build a community, and let's all find a prosperity for Canada and for the people of Canada. We're all Canadians, and may it be a blessed month. Ramadan Mubarak to all of you. Thank you, Andrew. Thank you for joining us tonight. And like I just said, we'll get back to you again on another occasion, and we will talk more. We are just reaching our aftar now. जाने से पहले एक दुआ कर दीजिए। आप आज बैठी हुई हैं, जनरली रोज़ मैं करता हूँ, आज आप कर दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व बारिक अला मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम अलैहि। अल्लाह ताला हम लोगों को आपने इस रमज़ान के महीने तक पहुँचाया। अल्लाह ताला हम लोगों को वो सब अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए जिससे आप हमसे राज़ी हो जाएं, और हमारी औलादों को और हमारे आने वाली नस्लों को हर बुराई से, हर शर से, हर हासिद की नज़र से महफूज रखें। आमीन। और सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और इस मुल्क में जहाँ हम रह रहे हैं, अल्लाह ताला इसको भी
सब बुराइयों से और मुसीबतों से और परेशानियों से महफूज रखें और मौसमों की शिद्दतों से भी महफूज रखें और हम सबको अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। विल गेट बैक टू यू अगेन अनदर नेक्स्ट ट्रांसमिशन मेहमान रमज़ान। जब तक अपना ख्याल रखिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा। वॉइस ऑफ टोरंटो TV@gmail. हमारा वॉइस ऑफ टोरंटो TV@gmail.com हमारा ईमेल एड्रेस है। और नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट फ्राइडे एंड सैटरडे विल कम बैक टू यू अगेन विद आवर लाइव ट्रांसमिशन। और अफ्तार का वक्त हो गया है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और हमें दुआ में याद रखें। वेरी गुड इवनिंग एंड वेरी गुड नाइट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविजन। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तुझ पर भरोसा किया और तेरे अदा किए हुए रिस्क से रोजा इफ्तार किया। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
أكبر الله أكبر لا